the Phillips curve, natural rate of unemployment and inflation. Okay, beta. Now, see, in 1958, very, very early, huh? I mean, imagine we are talking about a period when economics had just started in the world in many terms, right? So in 1958, we had this economist and his name was A.W. Phillips. What he did is he drew a diagram in order to go ahead and explain the relationship of inflation against unemployment. ठीक है जी? And he did this for years between 1861 to 1957. He found out that there is an inverse relationship between unemployment rate and inflation, right? So let's try to go ahead and plot some relationships better. In 1958, we had this economist. His name was A.W. Phillips. अभी लिखवाऊंगी बाद में, पहले एक बारी समझ लो सब, फिर लिखेंगे, हाँ? So in 1958, he was this economist, and he took data set from 1861 to 1957. And in this data set from 1861 to 1957, he found out that there is a negative relationship between unemployment rate and inflation. तो क्या पता चला कि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी तब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम थी, और जब इन्फ्लेशन ज्यादा थी तब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम थी. So he found this negative relationship. Then after 2 years, that means in 1960, we had two economists coming up, दो economists आए. एक का नाम था पॉल सैमुअल्सन, and the second economist beta, he was called as Robert Solow. तो ये दो economist आए. अच्छा, A.W. Phillips, इन्होंने जो data set collect किया था, he collected this data set for UK. सिर्फ UK के लिए ही collect किया ये data set. So then Solow and Samuelson, इन दोनों ने ये Phillips की exercise को अपनी country के लिए replicate करने की कोशिश की. So 1900 से लेके 1960 तक का डेटा सेट इन्होंने कलेक्ट किया, एंड दीज टू इकोनॉमिस्ट बेटा, दे वर फ्रॉम यूएस. सो दे कलेक्टेड दिस डेटा सेट फ्रॉम यूएस. हाँ, और फिर उन्होंने दोबारा निकालने की कोशिश की कि क्या ये सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन नेगेटिवली रिलेटेड है या नहीं है. इन्होंने भी सेम पाया, दे फाउंड द सेम थिंग कि यस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये दोनों नेगेटिवली रिलेटेड तो हैं, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड. बट बेटा उन्होंने देखा कि जब बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी तब ये रिलेशन थोड़ा सा ब्रेक कर रहा था, बट मोर और लेस स्टिल नेगेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, आई मीन नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टेड. सो इनको भी लगा कि हाँ ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. एंड बिकॉज दे ऑल्सो फाउंड आउट द सेम थिंग दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू, सो दे थॉट व्हाई नॉट जस्ट गिव इट अ नेम. मतलब दोनों जो फिलिप्स ने देखा अपनी कंट्री के लिए, उसी चीज को ये लोग अपनी कंट्री में देख पा रहे थे. दे कुड गो अहेड एंड सी द सेम थिंग. सो दे थॉट ओके, इफ द सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इसको कुछ नाम देना चाहिए. So then these two economists, Phillips ने खुद से नाम नहीं दिया था, Samuelson and Solow, these two economists, beta, they came ahead and they gave this relationship the name called Phillips curve. Okay. So they named this relationship as Phillips curve. Clear हुआ? After this, in 1970s, people started testing whether this relationship holds true or not. And they found out in 1970s, in US and in other OECD countries, they saw that inflation was also high. मतलब prices बहुत high थे. There was very high inflation.
but still people were unemployed. Unemployment bhi high thi. So both inflation and unemployment were high. But Phillips had suggested that there should be a negative relationship between the two, na? So this relation broke down. This was a contradiction to the Phillips curve, right? So what they found out is that this relation which existed till 1960s, this no more existed in the 1970s. The question is now whether this Phillips curve is actually valid or not. क्या ये Phillips curve actual में hold true करता है या नहीं करता? Right? Is this clear?